Good to go. So, hi, hello, and welcome to everyone. And we are here for the Tarot Mastery course by the Guy of Fortune. It's good to have you all here on this new journey. And I hope Hindi English ka combination would be good for everyone. Okay. So some points I'll cover in Hindi, some points I'll cover in English. Is that fine? Anybody who's not comfortable in English or not comfortable in Hindi, please tell. Totally fine, sir. Totally fine. Good. Okay. So you all are here because you have decided something. What have you decided? Not only to learn something, but also to start on a journey to guide people. Most of the community or most of the society thinks कि ये एक सिर्फ जरिया है पैसा कमाने का, फेमस होने का, सोसाइटी में लोगों की रिकग्निशन पाने का. But that is a part of it. You are now here to guide people and guide yourself. क्योंकि when you look at people, जब आप लोगों को देखते हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स को देखते हैं, तो आप ना ही उनसे सीखते हैं, बल्कि आपके अंदर वो नॉलेज आती है कि आप दूसरों को भी सिखा सके. So you get that idea to learn and to make others learn about it, educate others. Education is not only the bookish education. Education is also about how we live life. And tarot is all about your life in a set of cards. That's it. And any card at any moment of time is a reflection of your life, of your story, of what is going on in your life at that current moment. So whenever we do a reading, जब भी हम कोई reading करते हैं, तो हम क्या देखते हैं? हम उस इंसान के जीवन के उस पहलू को देखते हैं जो वो नहीं देख पा रहा है, right? As a human, हमारी एक limited perception है. We have a limited perception, limited understanding. And because of that, we are not able to always see, always understand. So tarot is that tool to help you understand, to help you know the hidden factors, or to help you even understand what is visible in front of you. A very good example will be a relationship, right? People who enter in a relationship, what happens? They are not able to see the mistakes that the other person is doing. Why? Because they are so blindly in love. And when they come to a reader or when they come to a spiritual guide or a spiritual coach, उनको पता चलता है कि ये तो भाई यहाँ तो ये रेड फ्लैग था जिसको हम उसका प्यार समझ के बैठे हुए थे, राइट? होता है, हम हमेशा देखते हैं कितने सारे जितने भी लव रिलेटेड क्वेश्चंस अब आपके पास आएंगे या आप डील करेंगे वो ऐसे ही, राइट? So this is just a sneak peek of what is going to come to you if you start this as a profession. But if you are doing it for yourself, you know your life better. So without any much further blabbering, because I like to speak, I like to blabber a lot. So please ignore that blabbering at times. Let's come back to the course and let's start. So I hope you all have your cards or the printed cards. Yes, Gulshan. सर मेरे कुछ क्वेरीज हैं, मैं पूछना चाह रहा था, कुछ डाउट्स रहते हैं काफी. मैंने टैरो कार्ड जैसे एस्ट्रोटॉक है या और भी ऐसी ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं, तो मैंने काफी सुना हुआ है कि मतलब मैं ये इस कोर्स स्टार्ट करने के पहले मैं चाह रहा हूँ कि वो जो भी मेरे मन में क्वेरीज हैं वो पूरे ही पहले क्लियर हो जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा. ठीक, तो बताइए. अभी पूछना सही है या बाद में पूछना सही रहेगा? आप वैसे भी मैं कोर्स कंटेंट पे अभी मैं आज हाथ नहीं लगाऊंगा, सिर्फ बेसिक्स पर अभी हम ध्यान देंगे, बहुत ही बेसिक. तो अभी जब ये पूरा कर लूंगा तब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है? ठीक सर, ठीक. अभी मैं कोर्स कंटेंट पे अभी आज हाथ नहीं. ठीक, थैंक यू सर. जी, वेलकम. ओके, सो यू ऑल हैव प्रिंटेड सेट या आपके पास अपना कार्ड डेक है? बहुत अच्छी बात है. नहीं है तो प्लीज प्रिंट करा लीजिए या उसको हैंडी रखिए अपने मोबाइल में इस तरह से कहीं पर भी, राइट? क्यों? क्योंकि जब हम टैरो को डिस्कस करेंगे तो उसकी जो इमेजेस हैं, जो अंडरलाइन फैक्टर्स हैं, अगर एक एक्सप्रेशन भी वो इधर का इधर देख रहा है तो उसमें भी फर्क हो जाता है जो उसकी इमेज है. अगर एक पत्ता ऐसे के बजाय ऐसे उग रहा है तो उसका भी मतलब बदल जाता है.
तो यू हैव टू हैव समथिंग इन हैंड, और आपको मैं जो स्क्रीन में इमेज दिखाऊंगा उसमें जरूरी नहीं है कि आपको जूम करके दिख जाए. सो बेटर टू हैव समथिंग इन फ्रंट ऑफ यू. ओके. नाउ few things as you must have already gone through, कि एक चीज है, Sundays will not continue. We'll have the weekdays and Saturday as the working days, as teaching days. Sunday it's a complete off. You can prepare, you can get your doubts, and next day you can ask about it. ठीक, because बीच में भी 2 Sunday पड़ेंगे. तो just before we start, I need to clarify this. Second, keep a note on your group. कोई भी अपडेट जो है, क्लास कब होगी नहीं होगी, कौन सी लिंक है, कौन सा ड्राइव फोल्डर है, वो सब आपको ग्रुप में जाएगा. पर्सनली आई वोंट बी एबल टू शेयर, बिकॉज 8 लोगों को अलग अलग भेजना वो मेरे उसमें नहीं हो पाता है. ठीक, तो इसीलिए एक जगह आपको कंबाइन कर दिया है. सेकंड, क्लास में अगर आपको कोई डाउट है दैट यू कैन आस्क. क्लास के बाहर कोई डाउट है, या तो पेपर पे नोट कर लीजिए या ग्रुप में उसको पोस्ट कर दीजिए, ताकि बाकी मेंबर्स को अगर वो समझ में आ गया है दे कैन हेल्प यू आउट. नहीं तो व्हेन आई कम टू द क्लास देन यू कैन डिस्कस दैट. ठीक. इसके अलावा इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम प्लीज कम एंड एड्रेस मी. किसी को कोई दिक्कत है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, या अगर स्पीड बहुत ज्यादा लग रही है ना, हो सकता है आपको थोड़ा धीरे सुनने की आदत हो, धीरे समझने की आदत हो, सो प्लीज स्टॉप मी देन एंड देयर. यू कैन रेज अ हैंड, यू कैन यूज द चैट बॉक्स एंड आस्क योर क्वेश्चंस. क्वेश्चन जो भी है, एक कार्ड से दूसरे कार्ड के जाने के बीच में पूछ सकते हैं, और यू कैन आस्क इट एट द एंड ऑफ द क्लास. ठीक, और यू कैन आस्क एट द वेरी एंड ऑफ द कोर्स ऑल्सो. फाइन. These recordings will be uploaded to YouTube today or tonight or maximum by tomorrow afternoon. तो उसका जो link है वो आपको next day ही मिलेगा. Okay, there is another point. क्योंकि वो upload होता है, process होता है, it takes time. Okay, so you have all the links in the group so that whenever you want, you can come back and reflect upon it. Okay, so these are some of the things that you need to know before we start off. If any doubts and questions, you're always free to ask. Okay, now let's start with it. Screen sharing is paused. Okay, so hopefully you can now see the screen. Okay, can you, everyone? Yes, fair enough. So some of you may already know me, and some of you might have known me just a few days back. So a little bit history or intro. So my name is Vinayak Asthana. पहले I was known as Tarot Stock. Now I'm known as Guy of Fortune. तो ये जो पीपीटी आप देख रहे हैं ये पास्ट की पीपीटी है. प्रेजेंट में आइडेंटिटी हैज चेंज्ड, बट द नॉलेज एंड वर्किंग पैटर्न रिमेन्स द सेम. So I am myself a certified psychic and a tarot reader, numerologist and a Reiki healer. Okay, my guru was from, yes, Gulshan. सर आप स्क्रीन नहीं दिख रही है, मतलब आप तो दिख रहे हैं, आपने अभी बोला आपका कि वो आपने स्क्रीन एडजस्ट, आपका जो व्यूइंग ऑप्शन है ना, वो एडजस्ट करेंगे तो आपको दिख जाएगा. बाकी सबको दिख रहा है? जी. ओके, गुड. ओके सर. ओके, यस सर. okay, yes. So this course is an ideation. ठीक है, जितना भी मैंने आज तक देखा है, सुना है, जितना मैंने लोगों को बताया है, उन सबका ये एक कॉम्बिनेशन है ये कोर्स, जो कि ना ही सिर्फ वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स आपको बताएगा, बट इट इज ऑल्सो गोइंग टू टेल यू द मॉडर्न एस्पेक्ट्स, द करंट डे एस्पेक्ट्स. ठीक, ताकि आप ना ही अपने आप को स्पिरिचुअली इनलाइटन कर सकें, बट साथ ही साथ यू कैन ऑल्सो गाइड योरसेल्फ इन दीज मॉडर्न स्मॉल लिटिल लव अफेयर क्वेश्चंस, बिजनेस अफेयर क्वेश्चंस, etc, etc. Right, so these are the two motives of why this and how this course has come together. Okay, now just please read the third paragraph, and it says, no matter how powerful the course is, your dedication, intuition, and practice is the only key to success. मैं पढ़ा दूंगा, I am going to teach you in these 10 days, I will be available for that explanation, but it should be your practice, it should be your dedication, because you won't understand a single word if you don't practice. Okay,
So that is another thing that you should keep in mind whenever you are doing or whenever you are learning any course, especially tarot, because tarot is all about your intuition and practice. Now, this, and yes, one more point. You may please ignoring all these noises of dogs and everything around me and try to focus on what I am saying. Okay. Now, this is the mini me, and you will find this icon wherever there is something that you should be knowing about, or wherever there is something that you should keep in mind. Okay, any tip, any trick that I have found or that I found it useful, that you can get through these icons and these small little boxes in the background. Okay, now let's start with this course. What is tarot? Starting May, I just said that it's a reflection of your life, of what is happening, what is not happening. So tarot is a storybook. It's a film. It's like a movie. You go to a theater, you watch a movie. We recently, there was Drishyam 2 about Vijay and his family, right? So what is happening? We are viewing that story through the lens of a cinematographer. Similarly, you are a cinematographer and you are watching someone else's life unfold into different chapters. ठीक, सामने वाले की लाइफ कैसे कैसे अनफोल्ड हो रही है वो आप देख रहे हैं, वो आप टैरो के थ्रू उसका फ्यूचर क्या है, क्या स्टोरी होगी आगे, पास्ट में क्या स्टोरी थी, ये भी आप जान सकते हैं, राइट? सो यू आर ऑल्सो समवेयर अ पर्सन हु नोज कि फिल्म का क्लाइमैक्स क्या हो सकता है, right? Because किसी के लाइफ में आगे क्या हो रहा है, that also you can know, that also you can get to know about, read about. And this has been helping people for more than over 600 years. 600 years की जो हिस्ट्री है वो नोन हिस्ट्री है. इसके पहले के भी जो हिस्ट्रीज हैं, जो अनडॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, वो भी टैरो की रही है. And people have used it as a spiritual tool, spiritual enlightenment. एक बात मैं हमेशा सबको, अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि टैरो का जो इन्वेंशन हुआ था, दैट वाज फॉर स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, नॉट फॉर द क्लीशे क्वेश्चंस ऑफ कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़ के चला गया है, वो मेरे पास वापस कब आएगा, you know, all these teenage questions. So these are teenage questions that I refer to. Yes, I respect these questions, but tarot is not meant for it. So sometimes tarot can give you very absurd answers and you have to decode it, right? Because हो सकता है वो इतना highly spiritual answer हो, highly इतना spiritual consequence हो future में कि आप उसको physical level पे नहीं decode कर पाएंगे कि वो उसका reconciliation बता रहा है कि क्या बता रहा है. So you have to be very much you know, active on the spiritual plus worldly plane of life. दोनों में आपको पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है, right? And when you start off with this journey, this is like one step into spirituality. बहुत लोग यहाँ पर जो है वो spirituality जानते हो, पर बहुत लोगों की journey spirituality में यहाँ से शुरू होगी. जैसी मेरी, I never knew that I would one day become a healer. I would one day become a Reiki master, or I would one day become a numerologist or anything. So I just started blindly. And see, now I am telling you, now I am giving you that. So you never know where your life takes, right? So Tarot card, as said, is a picture book, is a movie, it's a film and a mirror to your soul. Right? अभी बताया starting में that what is happening, you are not able to understand what's going on in your life, and hence it's a mirror to the soul. Now, tarot cards have images, they have symbols. अभी और एक बात बोली थी कि एक पत्ता इधर से इधर जा रहा है, उसका भी मीनिंग चेंज हो जाएगा. एक्सप्रेशन इधर से इधर है, उसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी. Why? Because every symbol, every expression is important when you are doing any reading. Okay, then there are astrological signs, numbers, crystals associated, and chakras associated with each card, right? स्टार्टिंग में जब ये चीजें बनाई गई थी, टैरो का इन्वेंशन हुआ था, तो उस समय चक्रास और इन सब पे इतना ध्यान नहीं दिया गया था. बट पीपल रियलाइज्ड कि अच्छा ये इस चक्रा से रिलेटेड कार्ड है, ये इस जोडियक से रिलेटेड कार्ड है, एंड दैट्स हाउ इट ऑल
got connected over a period of time, right? Now, this tool that we have in our hands, this lets you connect to your intuition, that lets you connect to your higher self. क्यों? क्योंकि वो जो इंफॉर्मेशन है, वो जो नॉलेज है, वो आपके अंदर ऑलरेडी फीड है, दैट्स ऑलरेडी स्टोर्ड इनसाइड ऑफ यू. एंड इनसाइड क्या है? दैट इनसाइड इज द हायर सेल्फ. So you connect to that higher self and you get that knowledge, you get that information, and that's how you work upon it, right? एक deck of cards है आपके पास, सबके पास होगा, जिसने प्रिंट कराया उसने भी देखा होगा, that there are 78 cards in it. 7, 8, 78. Out of which 22 are the major arcana and remaining 56 are the minor arcana. Arcana is nothing but when translated it means knowledge. So major knowledge and minor knowledge. अब इसका क्या significance होता है आगे, ये जब हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे, then we'll see. But initially, very olden days में it was used as, you know, as a playing card. Playing cards जो आप देखते हैं आज, जो ताश के पत्ते हैं, उन्हीं ताश के पत्तों से माइनर आर्काना निकला है. ठीक है, स्पेड, क्लब्स, एटसेट्रा एटसेट्रा जो भी है, उसी से फिर वॉन्ड्स, कप्स, swords and pentacles डेवलप हुआ. So that is why when you see कि जोकर होता है आपका उसमें, you know, in the playing cards there is a joker. That joker becomes page of wands or pages in tarot. ठीक है, so वहीं से वो इजाद हुआ है, and then my major arcana was added into it while making. अब थोड़ा सा क्योंकि आप इसमें घुस रहे हैं, so you need to know a little history also, so that if someone asks कि ये कार्ड किसने बनाया था, तो you know कि किसने बनाया था और किसने इलस्ट्रेट किया था. So जो widely used है, जो लिंक में मैंने आपको शेयर करी होगी या जो डेक आपने खरीदा होगा, that's called a Rider-Waite tarot deck. Rider-Waite tarot deck is the most commonly used and highly accurate and authentic form. आज present day में there is witches tarot, there is angel tarot, this tarot, etc, etc, etc. So वो सब कहाँ से निकला है? That has all come from the Rider-Waite only. So it's a modified version of Rider-Waite with different themes. It can be an angel theme, it can be Game of Thrones ka theme, it can be Friends series ka theme, okay? It can be Disney ka theme. So different themes have come up, but the major one is the Rider-Waite tarot deck. Now this deck was conceptualized, यानी इसका concept जो बनाया गया था कि ये ऐसे ऐसे बनेगा, वो था A.E. Waite. Okay, A.E. Waite was a person who decided that these things will go inside this card deck. And he was an important member of the Hermetic Order of the Golden Dawn. ये एक occult society थी लंदन में that started during the days, and this occult society decided to come up with something called tarot cards, with something called fortune telling, for more easy day-to-day understanding of how life can be. Okay. And it was illustrated by Pamela Coleman Smith. So Pamela Coleman Smith ने एक line, एक expressions बनाए. Yes, I agree, her illustration was not perfect, but the way she has done and hand painted each card, it's a commendable work to do, right? आजकल एक कार्ड बनाने के illustrators 5-5, 6-6 हजार रुपए मांगते हैं एक कार्ड बनाने का, सिर्फ एक कार्ड का illustration करने. And she made all of them on the orders given by the Hermetic Order of the Golden Dawn. Okay? So these are hand painted card decks. Now you are getting a printed version of the same. Scan karke, print karke, resell and resell and resell. That is what is happening. But original deck was hand painted. That time all the decks were hand painted. Okay? So just in the last slide you saw that it came from a set of playing cards. Those playing cards were called tarocchi. Tarocchi से word बना है tarot. So tarocchi Italian word है, which was used for an Italian card game, और वहां से word आया है tarot. ठीक. सबसे पहले
जो टैरो डेक या टरोची कार्ड डेक्स जो बने थे, दैट वर कमीशन्ड बाय द ड्यूक ऑफ मिलान, और उसको उन्होंने कहा था विस्कॉन्ती स्फार्जा टैरो डेक, स्फोर्जा सॉरी, टैरो डेक। ठीक, वो उनके अपने रिक्रिएशन के लिए, फॉर हिज ओन हैप्पीनेस, फॉर हिज ओन प्लेजर, ही ऑर्डर्ड दैट ओके मेड दीज कार्ड डेक्स, right? And then that came into existence. But Visconti's Forza and the Rider-Waite are two different decks. Please don't confuse them. Okay. जो original hand painted cards थे, they were came to be known as the Devil's Picture Book. चर्च जो थी उस समय, उन्होंने कहा कि ये जो है it is like a devil's picture book. It's like a devil work. 839. Okay. So it's like a devil's work to do, because Christianity में fortune telling को भी devil's work कहा गया है. Christianity forbids what? Fortune telling, palmistry, astrology, anything. They say it is made by God, so God will decide. You are no one to predict or you are no one to guide. ठीक, ये उस समय के beliefs थे, and that is why church ने उसको बैन करा दिया था कि ये अब यूज में नहीं आएगा. This will never get to be used. But then later on, people became rebellious and they started going against the church's law, because church बहुत ज्यादा dominating हो रहा था, बहुत ज्यादा controlling हो रहा था आपके लाइफ के ऊपर, right? Or when you will look into the tarot cards, you will see that there are very that in especially in the major arcana there are a lot of Christian symbolisms, Christian imageries. ठीक है, especially जो lovers का कार्ड है, इधर पीछे लगा है, ये lovers का जो कार्ड है, आपने अपने में भी देखा होगा, that is the story of Adam and Eve, of how this world was created. तो वो एडम और ईव की जो कहानी है, वो कहानी कहाँ से आती है? दैट कम्स फ्रॉम द क्रिश्चियन फिलॉसफीज, फ्रॉम द क्रिश्चियन बिलीफ सिस्टम्स, कि एडम ईव ने गलत डिसीजन लिया तो उसको हेल में डाल दिया और फिर वहां से वो दुनिया चलना बनना शुरू हो गई. और भी इफ यू सी, देन देयर आर एंजल फिगर्स. उसी लवर्स में यू विल सी दैट देयर इज आर्कएंजल गैब्रियल. ओके, तो ऐसे ही there are many images. High priestess का कार्ड है, there is a female pope. Then there is hierophant का कार्ड एक आता है, where you have a male pope. Similarly, there are man, father, children. ये सब के जितने भी सब images हैं, they are all inspired from the Christian philosophies. There is one more card in the minor arcana which very clearly shows. That is the Five of Pentacles. फाइव ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में जो हैंड पेंटेड चर्च मिरर्स होते थे, चर्च विंडोज होते थे, उसका रिजेम्बलेंस दिया है पीछे. ठीक, सो इसीलिए क्योंकि ये क्रिश्चियनिटी के बिलीफ से आया है और इट पोज्ड अ हार्म टू द क्रिश्चियन बिलीफ पैटर्न, तो चर्च ने क्या किया? उसको बैन कर. लेकिन फिर से वो स्टार्ट हुआ एंड देन नाउ इट इज इन वेरी मच फैशन. ओके, Any confusion until here? नहीं समझ आया? मैंने बहुत तेज बोला, बहुत धीमे बोला? नहीं? Okay, good. If you have, please raise hands or use the chat box and let me know. ठीक, जो मेजर आर्काना है, मेजर आर्काना ही एक ऐसा पार्ट है पूरे टैरो का जिसको अगर आपने समझ लिया, if you understand that and if you have a clarity on that, you know everything about the tarot. Then minor arcana is like peanuts, चने चबाने का काम. ठीक, so major confusion comes in the major arcana, which is called the fool's journey. The very first card that you get, that is 0 number, that is of the fool. Wahi fool will learn different lessons, will learn different chapters, and will finally end up in what? In the world card. ठीक? So the fool's journey, which will be starting with tomorrow. So right now, please don't take it personally, but इस respect में you all are the fools, not वो वाला fool, but fool जो सीखने निकला है. I was also a fool. I'm still a fool. Okay, anyone in life is a fool at any given point of time, because at any point, at any instance, we are learning something. At any instance, we are exploring something. We are getting to know something, right? अब एक पॉइंट बोला था कि
600 years से तो हम जानते हैं कि टैरो एग्जिस्टेंस में है, लेकिन जब सेकंड पॉइंट है, इन 1377 अ जर्मन मॉन्क स्टेटेड कि एक जर्नी ऑफ लाइफ एंड डेथ, लाइफ एंड सोल डिनोट करते हुए एक सेट ऑफ कार्ड्स थे, एग्जिस्ट करते थे. ही नेवर न्यू कि वो क्या थे, बट just like tarot they used to exist. So we can say that it is dated long back to more than 600 years or to the known history of tarot cards, right? कुछ लोगों ने उसको क्या किया, क्योंकि इसमें क्रिश्चियन सिंबल्स थे, सो दे स्टार्टेड प्रीचिंग क्रिश्चियन बिलीव्स. ठीक है, कि सैल्वेशन होता है, जजमेंट डे आता है, उस जजमेंट डे के लिए यू शुड बी प्रिपेयर्ड, राइट? एक जजमेंट का कार्ड आएगा अभी towards the end of the journey. So judgment का कार्ड आता है, you should be, be sin free and do good to others, etc etc. तो इस वजह, इस तरह से भी उन्होंने फिर वो क्रिश्चियन बिलीव्स करना शुरू कर दिया. Hermetic Order of the Golden Dawn ने Kabbalah is also a kind of astrology, not exactly astrology, so don't confuse yourself. Kabbalah इस समय क्या होता है, but एस्ट्रोलॉजी और इजिप्शियन थ्योरीज को लेकर के ये एक कार्ड डेक क्रिएट किया. ठीक, फिर लेटर ऑन there were chakras added, numerology was connected, and other things that got associated with the same. Different people have different approach to tarot. मेरा अप्रोच कुछ और हो सकता है, सामने वाले का कुछ और हो सकता है, मेरी अंडरस्टैंडिंग कुछ हो सकती है, सामने वाले की कुछ और हो सकती है. तो अगर किसी ने मेरा प्रीवियस कोर्स किया है टैरो का ही, जैसे किसी ने हो सकता है ज्वाइन किया होगा पिछले कोर्स में से भी, तो वो ये देखेंगे कि हर कोर्स में मेरी लैंग्वेज चेंज हो जाती है. आई मे नॉट स्पीक द सेम थिंग जो मैंने लास्ट टाइम बोला था, कुछ पॉइंट्स उसमें चेंज हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि इट्स ऑलवेज अबाउट यू गेट टू नो समथिंग न्यू अबाउट दैट कार्ड एवरी टाइम यू टीच इट, एवरी टाइम यू यूज इट, एंड एवरी टाइम यू लुक एट इट. ठीक, सिमिलरली आपका भी वो परसेप्शन चेंज होगा. तो आई कैन गिव यू अ सर्टेन नॉलेज कि हाँ भाई इस कार्ड का ये मतलब होता है. ठीक है, दैट इज नॉट सेट इन स्टोन. इट कैन मीन समथिंग एल्स एज वेल टू व्हेन यू आर रीडिंग. So that comes from your intuition. That is why it is said it's a picture book. Picture book में हो सकता है किसी को एक फूल पसंद आ रहा हो, और हो सकता है किसी को कोई पत्ती पसंद आ रही हो. वो फूल किसी के लिए हो सकता है लव दिखा रहा हो, वो फूल किसी के लिए हो सकता है कि उसको लगे कि ये मुरझाया हुआ है, सो वो दुख दिखा रहा हो. So these can be different ways or different viewpoints of looking at a card that differs from people to people. I will give you a set of things कि हाँ इसका ये मतलब होता है, then it's your journey to explore and know about it. ठीक, दे आ गई टिप नंबर 1, and that tip is that every card deck has a life in it. If you are having a tarot card in your hand, it's like a living existing thing in your hand. ठीक, उसके अंदर भी एक सोल आती है. वो सोल उसके अंदर तब तक नहीं रहती है जब तक वो एक दुकान में कोने में पड़ा रहता है, बट जिस समय इट कम्स टू योर हैंड इट गेट्स दैट सोल. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिस्पेक्ट इट. पैर से नहीं लगाना, बेड पे नहीं रखना, झूठे हाथों से नहीं छूना. ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, जस्ट लाइक वी ट्रीट एनी सेक्रेड ऑब्जेक्ट, सो इट्स अ सेक्रेड ऑब्जेक्ट. बहुत लोग ऐसा करते हैं ना, तो ये फॉरेन कल्चर में ऐसा होता है कि सिगरेट पीते हुए दे आर रीडिंग, ड्रिंक करते हुए दे आर रीडिंग, खाते हुए इधर से खा रहे हैं इधर से रीड कर रहे हैं. दीज थिंग्स शुड बी अवॉइडेड. बट अगेन दे आर योर कार्ड्स. इफ यू थिंक कि नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, बुरा नहीं मानेंगे, तो अपनी अपनी श्रद्धा के ऊपर है. ठीक, बट दैट इज माई वे ऑफ लुकिंग एट इट, सो आई टेल यू दिस. ओके, एंड ओके, and anytime when you try to speak to the cards, हो सकता है कि कभी कभी they give you a very clear answer and कभी कभी they can give you a hazy answer. Now what is the reason? The reason is कि tarot cards भी बताते 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 थक जाते हैं, so they need some resetting. वो resetting और cleansing कैसे होती है वो second part में देखेंगे. ठीक, so this is the first part of this presentation where we come to an end. Now group description में आपने पढ़ा होगा there is period 1, period 2. That period 1, period 2 इसलिए किया गया है क्योंकि Zoom की लिमिट्स होती हैं, 40 minutes की लिमिट. So you have 5 minutes break and we'll connect once again after 5 minutes and continue with it.
So if you want to freshen up, want to have water, these are your 5 minutes where you can do it on a daily basis. Okay, cool. All clear? Any confusion? Anything? Good. Fine. So I'm ending this meeting here. Let's catch up in the next 5 minutes. Okay. And I prefer if people are in a situation to turn on their cameras, it's good. Otherwise, I feel like I'm speaking to brick of tiles on the screen. So at least I could see your expressions and get to know if you are getting it or not getting it. Okay? Only if you are comfortable and you are in such a situation. I know it's 9 p.m. in the evening. Not everyone can be decked up. Okay. So yes, let's continue with the second part. Second part is nothing but giving you a little bit more brief of how tarot cards work and what are the divisions and further subdivisions. So tarot cards, as said, are divided into two major sections. Okay, not major, two sections. Sections are major arcana and the minor arcana. Arcana is what? It's knowledge. So major knowledge and minor knowledge. Major knowledge can be telling about graduating a college degree. It can be telling about going through a spiritual transformation. It can be telling about learning specific lesson in life. Minor arcana mostly tells you about that today you'll be having a headache. Today your boss is going to be shouting at you. So small little things that may happen in your life are indicated by the minor arcana. This does not mean कि ये vice versa नहीं हो सकता है. ये vice versa भी हो सकता है. मेजर अरकाना भी हो सकता है बता दे कि आज कॉलेज में या आज क्लास में ऑफिस में आपको आपके कलीग से झगड़ा होने वाला है, राइट? दैट कैन आल्सो बी द केस. सो मेजर माइनर इसलिए है ताकि फर्स्ट रीजन ये है कि मेजर अरकाना इज अबाउट दैट जर्नी, इज अबाउट मेजर स्पिरिचुअल लेसन्स एंड ट्रांसफॉर्मेशंस दैट यू नीड टू गो थ्रू. लेकिन माइनर अरकाना छोटी चीजें हैं जो आपको अलोंग द वे चलते हुए सीखना है, right? So that is the only reason why these are divided into two different sections. The major arcana, as said, is called or classified as the fool's journey. एक fool की journey towards learning, towards enlightenment. And minor arcana has a further subdivision, please note the words, which is the four suits. Those four suits are the wands, the cups, the pentacles, and the swords. These four suits are nothing but the four elements: air, water, fire, and earth. So, आपकी लाइफ में ये चार एलिमेंट्स का बैलेंस होना बहुत जरूरी है. That is why minor arcana is educating you or educates you about कि कौन सा एलिमेंट, कौन से डिग्री का कौन सा एलिमेंट आप में वीक है. Why did I say degree? Because Ace of Wands is the best. ठीक है, इसमें आपको हो सकता है उतना चेंज करने की जरूरत ना हो, लेकिन 10 of Wands पर if you go, that's about a man carrying so much, which shows कि यहाँ पर huge major changes are required. ठीक, so it is telling you, it is educating you about that these changes you need to make, Mr. or Mrs. Okay, fine. Clear enough? Major arcana, minor arcana, and minor arcana का further subdivision. ठीक. Now there are specific terms. जो terms हम use करते हैं as a reader, as a user of a tarot deck. ठीक है. Now what are these terms? You need to know because हो सकता है कहीं ना कहीं during the course of the whole course we get to use these more frequently. पहला है tune in. You remember the old transistor radios? ठीक है, उसमें से गोल गोल घुमा घुमा करके उसका वो आप फ्रीक्वेंसी सेट करते थे. तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्यूनिंग इन, राइट? यू ट्यून इन टू अ पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन और अ पर्टिकुलर चैनल.
So tuning in is connecting to that higher self or spiritual transcendental entity or source. Source is equal to God, is equal to universe, is equal to anything that you believe in. उसको हम source कह करके address करते हैं, ठीक? एंड हायर सेल्फ वो आपका है, हायर सेल्फ हो सकता है जिसके लिए आप रीड कर रहे हैं, उसका हायर सेल्फ हो सकता है, ठीक? सो कनेक्टिंग टू दैट higher power, to that higher self is called tuning in. अब नाता जोड़ लिया, कनेक्शन जोड़ लिया, तो सेकंड स्टेप क्या है? इंफॉर्मेशन लेना. इंफॉर्मेशन लेना, टू गेट दैट इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड चैनलिंग. Connecting with a non-physical entity such as spirit, source, higher self, spiritual entity, etc. to get an information. ठीक है? So step 1 is to tune in and step 2 is to channel. जो बहुत ऐसा होता है ना, channeled messages from your soulmate, channeled messages from the ancestors, channeled message from your person. तो channel क्या किया आपने? That information that you have gained, that emotion, that message that you have gotten is the channeling. Tick, clear? Tune in or channeling. These are two different things. Step 1 is to tune in, to connect to that person or to that entity, and then to gain that information is channeling. Tick, clear? ये point पे सबको बहुत confusion होता है. Tick, sorry. Now, what is a hit? Now, hit is not that kala wala spray. Hit is getting a correct answer. मेरे ऐसे witty question, witty वो रहते हैं. Please, you can, if you don't like, you can ignore. But during the course of the whole these days, you might get to see a part of me that you don't see publicly. ठीक है? So hit is getting a correct answer. या correct situation का analysis कर लेने को हम hit कहते हैं. किसी ने आपसे पूछा प्लीज गिव मी अ जनरल रीडिंग, और आपने उसको ये बता दिया कि दिस इज हैपनिंग इन योर लाइफ. सो दिस देन बिकम्स अ हिट फॉर यू व्हेन, जब आप उसको वो सेम एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन दे दे और वो कहे वाह, ये तो आपने एकदम पूरी कहानी बयां कर दी. सो दैट इज कॉल्ड अ हिट, टू गेट द राइट इंफॉर्मेशन और टू गेट द राइट आइडिया ऑफ व्हाट इज हैपनिंग. देन वी गेट स्प्रेड. Spread is way of that you lay down your cards. Cards आपने draw तो किए, but आप किस तरह से उसको place कर रहे हैं, that is called a spread. So two spreads very major are there. It's called a horseshoe spread and a Celtic cross spread. ठीक, ये लास्ट में आएगा. So अभी इसमें आपने दिमाग नहीं खर्च करना है. लेकिन जो बेसिक स्प्रेड होता है जो हमेशा यूज करते हैं, that's a 2 card spread और a 3 card spread. ठीक, क्योंकि हर समय इतना टाइम नहीं है कि आप 7 कार्ड्स निकाल करके उनको पढ़ें, 12 कार्ड निकाल करके उनको पढ़ें. सो यू डू क्विक रीडिंग्स ऑन 2 and 3 cards. Okay. Now, what is karma? Karma is anything that we do, any action that we send out in the universe. ठीक, जो भी हम क्रियाएं कर रहे हैं, जो भी whatever we are working, like I'm speaking right now, this is a karma. If I'm doing it with honesty, it's a good karma. If I am diluting it, if I'm not being honest, I'm doing a bad karma. ठीक? So that is what a karma is. Then you have heard of a word called karmic contract. Karmic contract. आपने किसी के साथ अच्छा किया, आपने किसी के साथ बुरा किया, उसके साथ आपने क्या क्रिएट किया? कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया. आज अच्छा किया है तो हो सकता है भविष्य में, आगे जीवन में वो आपके साथ अच्छा कर दे, या दूसरे लाइफ टाइम में आपका कुछ अच्छा करे. इट मे ऑल्सो बी दैट इफ यू हैव डन रॉन्ग, देन दैट पर्सन इज गोइंग टू डू रॉन्ग टू यू. कहते हैं ना, मैंने उसका पिछले जन्म में पता नहीं क्या बिगाड़ा था. तो वो बिगाड़ा इज व्हाट इज दैट कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट दैट यू साइन विद दैट पर्सन इमीडिएटली व्हेन यू गेट इन कॉन्टैक्ट और व्हेन यू गेट इन कनेक्शन. देन द वर्ड इज साइकिक. ठीक, साइकिक क्या होता है? Psychic is anyone who can use his inner powers, inborn powers, to see and feel beyond physical experience, beyond physical perception.
यानी जो आपको ऐसे दिखाई दे रहा है कि अच्छा यहाँ पर मेरे सामने ये फूल लगा हुआ है, ये मुझे दिख रहा है, इसका कलर दिखाई दे रहा है, लेकिन हो सकता है कि थ्रू माई सेंसेस आई कैन ऑल्सो गेट टू नो दैट इस फूल के अंदर कोई एक ऐसी एंटिटी है, एक ऐसी एनर्जी है जो कि क्या बता रही है कि ये फूल बहुत दुख में है, इसको बहुत धूप लग रही है, और वो कह रहा है कि भाई कोई मुझे या तो साइड कर दे, या पानी पिला दो, या तो के कहीं इधर उधर कर। ठीक, so just giving a very lame example to make you understand. ऐसा होगा नहीं, लेकिन to feel and experience and see beyond physical perception, physical experience. ठंड लग रही है किसी को यहाँ बैठे बैठे, लेकिन when we do a reading, तो उसमें आपको हो सकता है कि आपको फील आए जैसे कि बहुत गर्म है। ठीक है, गर्म क्या है? दैट गर्म कैन बी टेम्पर ऑफ द पर्सन, दैट गर्म कैन बी a situation, a heated argument that a person can get into. ठीक, so experiencing beyond physical experience is called a psychic. ठीक, ऐसा नहीं जैसे आम भाषा में जिसको भूत प्रेत दिखाई दे, जो भूत प्रेतों से बात कर सके, उसको साइकिक है। ठीक, आम भाषा, आम लोगों की, आम जनता की भाषा। लेकिन आपकी भाषा में आप क्या कहेंगे? दैट यू कैन, which you can feel and see beyond physical perception and experience. Okay, that is what a psychic is. Now psychic protection. जब आप किसी से ट्यून इन कर रहे हैं, when you are tuning into someone, when you are connecting to someone, then what you do a psychic protection. You make a shield around yourself. क्यों? क्योंकि हो सकता है वहां की नेगेटिव एनर्जी आप में चली जाए, आपकी नेगेटिव एनर्जी सामने वाले के पर्सन, सामने वाले के अंदर चली जाए। ठीक है, सो whenever you are reading, ये रीडिंग क्या है? इट्स अ एनर्जी बेस्ड रीडिंग, राइट? So exchange of energies can happen. So it's very required that what you do, you create a protection, you create a bubble of protection of energy around you, which is called the psychic protection. So a protection that you gain by rituals, prayers, visualizations. Rituals क्या होंगी, prayers क्या होंगे, visualizations क्या होंगी, next slide पे आएगा, that you can do to protect yourself. And lastly is ethics. Some set of rules for reading cards that you develop by yourself or that you are taught. मेरे टीचर ने मुझे कुछ सिखाया होगा, मैं आपको कुछ बताऊंगा, तो जो गाइडलाइंस होती हैं कि ये मेरे नॉन नेगोशिएबल पॉइंट्स हैं, ये मेरी बाउंड्रीज हैं, बेसिकली बाउंड्री। जैसे मेरी बाउंड्री है रात के 11 बजे आई विल नॉट रिप्लाई बैक टू एनी क्वेरी, एनी इंक्वायरी अबाउट रीडिंग। नहीं तो लोगों का बस चले तो सुबह 4 बजे भी बोले कि आप अभी के अभी हमारे रीडिंग करके दे दीजिए। ठीक, सो क्रिएटिंग अ बाउंड्री इज वेरी रिक्वायर्ड। ठीक है, नहीं लोग करते हैं, ऐसे मैसेजेस आते हैं मेरे पास, इसलिए आई एम टेलिंग ऑन प्रैक्टिकल बेसिस। सुबह 4 बजे लोग फोन करके कहते हैं कि आप प्लीज मेरी रीडिंग कर दीजिए, मैं बहुत परेशान हूं। ठीक है, सो दैट कैन नॉट हैपन। सो एथिक्स की नहीं भाई, ये तो नहीं हो सकता। ओके, एथिक्स क्या हो सकते हैं? एथिक्स ये हो सकते हैं कि फर्स्ट नंबर, ऑलवेज ट्राई एंड ऑलवेज प्रोटेक्ट योरसेल्फ। प्रेयर से, क्रिस्टल से, विजुअलाइजेशन से। ये क्रिस्टल्स आप हाथ में पहनते हैं या अपने पास रखते हैं, that is to protect yourself when you are healing, when you are reading or doing any spiritual activity which involves exchange of energy. ठीक, second is keep on connecting to the source on a regular basis. सोर्स क्या है? वो हायर एनर्जी है, हायर पावर है। बहुत लोग एंजल को सोर्स कंसिडर करते हैं, बहुत लोग भगवान को एंजल कंसिडर करते हैं, बहुत लोग अल्लाह को कंसिडर करेंगे। तो वट एवर यू कंसिडर एज द सोर्स ऑफ योर एनर्जी, ठीक है, वो सोर्स आपका इष्ट भी हो सकता है। देयर इज अ वर्ड इन हिंदी कॉल्ड इष्ट देवता। वो इष्ट देवता भी आपका सोर्स ऑफ एनर्जी हो सकता है। सो कनेक्टिंग टू दैट सोर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। ठीक, लेकिन डिफरेंस क्या रखना है? that you always have to remember the thin line between religion and spirituality. ठीक, आप ये स्पिरिचुअल काम कर रहे हैं, रिलीजियस काम नहीं। ठीक है, तो वो लाइन ड्रॉ करना इज वेरी रिक्वायर्ड। ठीक, और रीडिंग अवॉइड करनी चाहिए दो सिचुएशंस में। क्या है कि जब आप किसी हैवी ड्रग के अंदर हो, डिप्रेशन की दवाएं चल रही हो, पेन किलर्स चल रही हो, आप ये कंज्यूम कर रहे हो,
उस समय पर ये काम नहीं करना चाहिए। बहुत लोगों को क्रोनिक डिप्रेशन होता है, चलता रहता है सालों साल, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट इफ यू आर अंडर अ मेडिकेशन और यू आर अंडर गोइंग अ ट्रीटमेंट, उस टाइम पर ये नहीं करना चाहिए। सेकेंड, व्हेन यू आर इन अ स्टेट ऑफ सडन शॉक। सडन शॉक हो सकता है भाई कि किसी की जॉब तुरंत चली गई हो, किसी का तुरंत ब्रेकअप हो गया हो, कोई घर में डेथ हो गई हो। ऐसे सिचुएशंस में अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज योर एनर्जीज आर डिस्टर्ब्ड एट दैट पॉइंट, एंड वट एवर यू डू यू विल नॉट अंडरस्टैंड ऑफ वट यू डू। ठीक, तो ये दो स्टेट्स में रीडिंग अवॉइड करनी चाहिए। थर्ड, व्हेन इज अगर अनदर पॉइंट इज व्हेन यू आर एक्सट्रीमली टायर्ड। आपको पता है कि आप आज और नहीं कर सकते हैं तो नहीं कर सकते, ठीक है, पैसा लिया हुआ है कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे अपॉइंटमेंट दे दीजिए, नेक्स्ट डे टाइम दे दीजिए, लेकिन सेम डे डोंट डू, बिकॉज दैट विल अफेक्ट योर क्वालिटी ऑफ वर्क। ठीक, किन लोगों के लिए करना नहीं करना चाहिए? पीपल हु आर अंडर इंटॉक्सिकेशन, हु आर स्टिल इन अ हैंगओवर। ठीक है, बहुत लोगों की आदत होती है, इट्स लाइक इट्स दीज आर ऑल फॉरेन कल्चर्स, इंडिया में भी अब होने लगा है, ऐसा कुछ नहीं है। बट व्हाट हैपेंस इज दैट पीपल ड्रिंक ऑन अ इन अ बार, they open their cards and start reading. तो ऐसे में आप अपने होशो हवास में नहीं है, you are not under your senses, so it becomes very difficult for you to understand anything or to guide that other person as well. ठीक, तो ये दो reasons होते हैं। Second is when someone has not permitted you. Ideal gap between two readings, ideal gap between two readings आप consecutively भी कर सकते हैं अगर आपके अंदर शक्ति है। आप डिसाइड कर सकते हैं मुझे 5 मिनट का ब्रेक चाहिए, I cannot do one after the other. Similarly, आपको हो सकता है आधे घंटे का ब्रेक है, right? So it depends on person to person of what their capacity is, what the capacity that you develop. दूसरा पॉइंट किसके लिए नहीं रीड करना चाहिए? Someone who has not permitted you. Permitted का मतलब मेरे बॉयफ्रेंड का जॉब कब लगेगा? When will he get that job? When will his issues resolve? Your boyfriend has not allowed access permanently. हस्बैंड के केसेस अलग होते हैं, मदर डॉटर मदर सन के केसेस अलग होंगे, पेरेंट चाइल्ड के केसेस अलग होंगे, बट अ थर्ड पर्सन जो आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, जिससे आपका कोई परमानेंट कनेक्शन नहीं है, यू शुड नॉट रीड फॉर दैट पर्सन और आस्क फॉर दैट पर्सन। ठीक, नाउ समवन हु डजंट बिलीव्स इन योर रीडिंग। बहुत लोग होते हैं, अभी एक दिन आया था, I want to try a free reading. If you are able to give me a correct analysis, I will pay you for your services. So someone who doesn't believe in your readings or believe in your capacity, it is not required. It is not required that you prove yourself to them. Just because कि नहीं मुझे आता है मैं दिखाऊंगा कि मुझे आता है, नहीं. If they don't respect you, then don't read. ठीक. And third point and the second point, sorry, fourth and second point are correlated. Asking unless you are directly connected. Ex-husband, ex-boyfriend, someone who has left your life, जिससे आपका लेना देना खत्म हो गया है, उस व्यक्ति के बारे में भी नहीं पूछना चाहिए। ठीक, जिससे आप कोई कनेक्शन नहीं है, जो आपकी लाइफ से जा चुका है, उसको नहीं करना चाहिए, छेड़ना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उनकी लाइफ है, that is not your life. You are responsible for your life, not the life of 10 million others around you. ठीक, so these are the situations. Protection कैसे होती है? Now protection is very important because if you don't protect yourself, energy can come down, your energy can travel, which can impact your physical health, mental health. You may feel drained, you may feel a sudden headache, shot in the head. So these things are required for you to understand. Okay? Now, what you can do? There are 4 ways. Daily routine mein, you can create a small spray for yourself. एक spray bottle में you add some salt, some Himalayan salt you add, and you fill it with clean water, RO water, and you create a spray. जब भी आपको ड्रेन लगे अपने ऑरा में उसको स्प्रे कर लीजिए and you are refreshed. Else have a salt water bath on a regular basis. If not regular basis, make it a ritual that once in a week I'll do, twice in a week I'll do, something like that. Then would be smudging. Smudging क्या होती है?
स्मोक से चीजों को क्लियर करना, एनीथिंग that you clear with the help of a smoke therapy is called smudging. Smudging भी किसकी, sage या frankincense. Sage is a special kind of a leaf. Frankincense is your लोबान. ठीक, इसके धुआं, इसका जो धुआं, अभी तो you get that sambrani cup also. ठीक है, so anything can be done. Right? Then crystals. Crystals में must have crystal should be a black tourmaline or a clear quartz. अपने लिए रीड कर रहे हैं then it's okay, but दूसरों के लिए अगर start कर रहे हैं then you should have this. Okay, obsidian, amethyst are optional. And prayers, जो आप डेली प्रेयर करते हैं, डेली पूजा पाठ करते हैं, उसके अलावा शुरू करने से पहले there is something called a unity church prayer. There is any angel prayer. There are many archangel prayers available online that you can use, or there is one prayer that I have mentioned, that I have written for myself, that you can use. Okay, now what are these two prayers? The angel prayer. Okay, so अभी it's about मानो तो गंगा माहू, ना मानो तो बहता पानी. ठीक है, so if you believe in the angels, you believe in the Jesus power, then you use these prayers, or you can substitute those words with any of your liking. ठीक, so unity church prayer always mentions God. God तो आप हिंदी में भगवान को भी बोलते हैं. ठीक, so the light of God surrounds me, the love of God enfolds me. ये मिलेगा आपको, ठीक है, ऐसा चिंता मत करिए, मैं दूं. ठीक है, the love of God enfolds me, the power of God protects me, presence of God watches over me, mind of God guides me, life of God flows through me, laws of God direct me, and so on. ठीक, इसी तरह ये जो फर्स्ट एंजल प्रेयर है, ये मैंने लिखी थी जब मैंने स्टार्ट किया था. So dear Archangel Michael and Jesus, please protect me now from all lower beings and all lower energies. I call upon my angels, guides, spirits, and gods to come close to me. Bless me with their divine presence, kiss me with their divine love, so that all through today, my intentions, my reading may be my best. Universe, please guide. Universe, please be a guide and be with me all through today. Yeah, all throughout. ठीक, any of the prayers you can use. नहीं आ रहा है तो सीधा ओम नमः शिवाय बोल के भी शुरू कर सकते हैं. ठीक, जरूरी नहीं है कि इतना लंबा बैठ के पढ़ें. हर रीडिंग के पहले जरूरी नहीं होता है, इसीलिए make it a ritual that in the morning you do, or before you are starting your reading, just do it once so that you are protected. ठीक, then there are many visualizations. Visualization, there is a white light visualization, that a white light is coming down and creating a white bubble around you. There's a green light coming around and creating a bubble around you. There's a blue light of Archangel Michael coming and creating a bubble around you. ठीक, so any of the visualizations you can create. It can also be a pink light coming from Krishna Bhagwan and creating a bubble around you. ठीक, so any god or any god force that you believe in can be an entity of your power, of your protection. ठीक, that is how you do. Now choosing the right deck. So in the market you have these pip decks available. ठीक है, और भी बाकी जितने decks हैं, these are called pip decks, जिसमें कि हो सकता है you may not understand what is happening. ठीक है, स्ट्रेंथ का कार्ड ऐसा बना होगा कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये स्ट्रेंथ है. ठीक है, नाउ अभी जैसे कि एक देयर समथिंग कॉल्ड ग्रेगरी स्कॉट, वी आई रिसेंटली ऑडिटेड, तो उसमें 8 ऑफ कप्स का कार्ड ऐसा बना है कि वो समझ में ही नहीं आएगा कभी कि वो 8 ऑफ कप्स का कार्ड है. सो व्हाट यू डू इज दैट choose a deck for yourself. Choose those kinds of deck when you have a hold over the rider weight. That's a beginner level, that's the most accurate, and if you know this, you will know everything. ठीक, ये आना चाहिए, उसके बाद आप सब कुछ कर सकते हैं. क्योंकि बहुत लोगों को जब स्टार्ट करते हैं लगता है अच्छा ये भी खरीद लें, ये भी खरीद लें, ये भी मार्केट में है, तो नहीं, स्टार्टिंग इसी से. इसका बेस्ट क्वालिटी खरीद लीजिए, इसका बेस्ट क्वालिटी अपने पास रखिए, बट यू कैन लेटर ऑन कंटिन्यू एंड बाय न्यू टेक्स फॉर योरसेल्फ. ठीक, फाइनली द प्रोटेक्शन पार्ट, ये आपका सेज है. दीज आर हाउ द क्रिस्टल्स लुक, अगर किसी को लुक में कंफ्यूजन है तो. ठीक, this is protection part 2, and with this we come to an end. ठीक, तो आज आपने क्या देखा? What is major arcana? What is minor arcana? What are the key terms? How do you protect yourself? What are the prayers? And
what is the history of tarot, how did it start. ठीक, this is the first day. Okay, one more thing, ये 10-day का कोर्स जरूर है, but this 10-day can also be extended to 11 or 12 days because I don't want to rush कि जल्दी जल्दी पढ़ा के खत्म कर दो, नहीं, आराम से पढ़ाना है ताकि आपको भी समझ आए और आपको वो रिटेन रहे मेमोरी. ठीक, so from tomorrow we'll start on with the cards, we'll see how it actually works, how we read, and this was it for today from my side. Any doubts, questions, you are open to ask. Hi, bye. This is Chaitanya. So, Yes. can I get? I'm like on and off listening to your class. But can I get the when can I expect the recording coming my way? Tomorrow evening, India time. Okay. Because it will get processed, then I'll upload it, and then it will finally, be given to you. About So that whether much I time it have can take. access to. Okay. Okay. The reason that I'm checking is like, should today's class be linked to tomorrow's class, like, or can I join? Not exactly. Tomorrow, like, Tomorrow is a different thing starting off. So this is a section. That is another section. Okay. Okay. So you can also continue. Still, I will manage. Like, I will try not to like take multiple tasking. But Yeah. Okay. that happens. Yeah. 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 So, Thank you. yep. Yes. सर सर Yes. क्या ये रिकॉर्डेड सेशन हमारे मतलब हम कब सुन पाएंगे, मतलब आप कल सुन पाएंगे. ठीक है, कल मतलब कल सुबह में या कल दोपहर तक, क्योंकि अभी ये इसको एक बार जूम प्रोसेस करके सेव करेगा, फिर ये यूट्यूब पे जाएगा, वहां अपलोड होगा, अपलोड होके वहां प्रोसेस होगा, तो वो होते होते कल तक का टाइम लग जाए. ठीक है, तो आपको मिल जाएगा. ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच सर. वेलकम. Sir, I have one question. Just can we order this crystals also by the साथ में cards के साथ crystal order कर दें हम? हाँ, कर लीजिए ऑर्डर. ठीक, you can have a bracelet, you can have a wand or anything. Don't buy anything that is pointed नहीं होना चाहिए. ठीक है, it should be either soft edges, it should be either polished edge इसकी. ठीक. Just one more question. Like in crystals we have protection one. So tiger eye crystal पूरी माला है एक उसकी मेरे पास, तो वो भी इसके लिए वर्क करेगी? हाँ, कि मैं करेगी, कर सकते हो. You can use it. Okay. Yeah. Thank you. Welcome. Yes, Gulshan. सर टैरो डेक मैंने काफी अमेज़न पे देखे हैं, काफी जगह देखे हैं, तो उसमें मैं पहले रिव्यूज देखता हूँ. तो मोस्टली मैंने ऐसा सुना है कि जो टैरो डेक रहता है उसमें प्रिंटेड जो क्वालिटी रहना चाहिए वो एकदम क्लियर होना चाहिए. उसमें देखिए इससे एक रीडिंग्स पे काफी फर्क आता है. ऐसा वाला होगा, ठीक है, रेडियंट. ठीक, ऐसा दिखता होगा जो राइट. जिसने भी नहीं लिया है या अभी लेने का है, बाय दिस वन, दिस इज द क्लियरेस्ट वर्जन. हाँ भाई, बॉक्स वो 10 में है आपके पास, मेटल 10 में, ये ऐसे बॉक्स. दैट आल्सो वर्क्स Because मेरा I saw पहला the डेक वैसा reviews ही on the था. Amazon. Yes, because I saw the reviews on the Amazon, उस पे वो images कुछ clear नहीं है करके लिखा था. हाँ, तो नहीं, I ordered this thin one. ये बस ये वाले ऐसे हैं कि बस इतना डिफरेंस है इनमें कि ये थोड़े से इनकी ड्राइंग्स बेटर हैं बस, बाकी कार्ड्स वही सेम है, कलर भी सेम. Yes sir. ठीक है, तो जो आपके पास है और जो जागृति के पास है वो सेम कार्ड टेक्स्ट है, बस कलर का वर्ड डिफरेंस आ जाएगा और थोड़ा सा पिक्चर क्वालिटी का डिफरेंस आ जाएगा. ठीक. ओके सर, सर, बात सॉल्ट का आपने बताया, सॉल्ट बात का. हाँ, तो ये मेरे को पूछना था कि इसको डेली बेसिस पे कौन से सॉल्ट से कर सकते हैं? जो खाने में अपन नमक यूज करते हैं खाने में वो, या नमक सेंधा नमक डालते जो हैं होता वो है? जब ऐसे तो सेंधा नमक यूज करना चाहिए, पिंक हिमालयन सॉल्ट. नहीं हो तो जो सफेद नमक रोज खाने में यूज करते हैं वो यूज कर सकते हैं. और बेस्ट सी है सॉल्ट का भी सुना समुद्री था. नमक यूज करना, लेकिन समुद्री नमक आप हम्म. रोज कूट के नहीं डाल सकते पानी में, तो यूज द हिमालयन सॉल्ट. ठीक. सर उसका जो शेप में आते हैं बड़े,
तो वो भी डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है अपन खुलेगा नहीं कूट ना, के वो डालें घुलना उसको। है ना, उसमें घुलना भी तो चाहिए। अच्छा। इसीलिए जो पिसा हुआ आता है वही आप डाल पाएंगे। घुल बैठ के उतनी देर तो चला नहीं सकते कि वो पूरा घुल जाए उसमें। ठीक। नेक्स्ट, ऑल क्लियर एवरीवन? बाकी सब लिख रहे हैं, काफी क्वेरीज आती रहेगी हाँ, अब तो ड्यूरिंग क्वेरीज ये, क्लासेस। हाँ अच्छा, हाँ लिखने के ऊपर कल से लिखना नहीं है। हाँ, कोई जरूरी पॉइंट समझ में आया तो वो आपने स्टार बना के नोट कर लिया, अदरवाइज लिखने का नहीं, सुनने का है। ये क्लास में ऐसा जैसे लिखते हैं ना कि टीचर बोल रहे हैं और बच्चे लिखते चले जा रहे हैं, लिख रहे हैं लिख रहे हैं लिख रहे हैं, नहीं, समझने का है। समझ जाएंगे तो आप खुद से भी लिख लेंगे, कि आपको पीडीएफ मिलेगा अभी, उसमें सब लिखा हुआ है, सब ऐसा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ऐसा लिखने का नहीं है कि बैठ के लिख रहे हैं, समझिए पहले। ये सबको है, सिर्फ गुलशन के लिए नहीं, सबके लिए है। ठीक है, कि पेन नहीं चलाना है बैठ करके, कल से समझना है कि क्या समझाया जा रहा है। ठीक, ओके। हाँ सर, टैरोट में तो ये इंट्यूटिव हाँ, रीडिंग में आता है पूरा। यस, तो ओके। सेम लाइक ब्रेसेस मैंने भी पहना हुआ है, ये जो आपने पहना हुआ ना सिट्रीन है, लाइक सिट्रीन, सेवन चक्रा ऑफ टाइगर आई एंड सही, अमेथिस्ट। सही है, सही, गुड। क्लियर कॉर्ड्स भी पहन सकते हैं सर, क्लियर कॉर्ड्स। पहन सकते हैं, सबका अलग अलग पर्पस होता है, हर क्रिस्टल का अलग पर्पस। ओके, तो क्रिस्टल की भी सर आप थोड़ी सी जानकारी देंगे क्या? वो अक्रॉस द कोर्स जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे बताएंगे। ठीक सर, थैंक यू वेरी मच। So I wanted to confirm about deck. Will show you. हाँ सही है, गुड, Yeah. सर जितने भी लोगों ने परचेस किया हुआ है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग अपने कार्ड्स की जो भी डेक उन्होंने खरीदा है, तो एक एक दो पिक्चर्स या कार्ड्स की पिक्चर्स डाल दें, ताकि थोड़ा क्लियरिटी में जिन्होंने नहीं लिया है वो कंपेयर करके हो सकता है उसको ऑर्डर कर लें, तो बेटर वन वी कैन चूज। इससे बेटर इससे बेटर ऑप्शन आई कैन शेयर द लिंक ऑफ द Amazon from where I have ordered. That would be more better. श्योर, Why थैंक to यू वेरी मच। exchange pictures also? Like it's my card, so निकिता ओके को भेजा था, निकिता गई, निकिता नहीं, अच्छा ठीक, ओके। और कोई क्वेश्चन? So, sir, I have a small question. यस। I have the Rider-Waite tarot cards with me, but हम्म I bought it in 2018, हम्म and it's been with me. So all through these years, I mean, I've just stored it. Sometimes I shuffle, sometimes I, just looked at them, just kept it in front of me, the table, stuff like that, But I've really not taken care in a big way all these years. So now that we're starting this journey, would you recommend I just buy a new set of cards and we start, or is it okay to have this only Yeah. to like go Okay, so ahead? just before answering it, yes, your baby is crying, please go, not an issue. Yes, sir. Yes, sir. See you Thank too. you, sir. Yeah. Yes, sir. Okay, so what you can do is, see, if it is in a good condition, please use it. Only thing I'd suggest is what you do, कि वो जिस format, जो original format था, just reset it in that. Fool से world तक, and then wands 1, 2. That you do, smudge it with the, any sage or Sage, frankincense incense, or anything anything. like that. You just do it, and it's good to go. Not an issue. Because you already have it. So it's already connected to you, right? Just reset them when you're starting this new journey. So just reset instead of getting something. Okay. Yeah. Okay. last question, like you just now told to reset the cards and all. So like when I got cards, it's like 2-3 months back I got my cards. So I used to shuffle, talk to them, like I used to exchange energy and all. But हाँ, cards are not arranged in that way, like how you are telling. हाँ, so So do I need to keep arrange कर cards लीजिए, in that? because what this from tomorrow it is going to help you if I tell you that okay, bring the Fool card out. So you have that Fool card on top that you can quickly use. ठीक है? So resetting will also help in you accessing that card very easily. ठीक है? So if you already have it, if you have shuffled it, reset it, so that कल से आपको
उठाने में आसानी लगे. ठीक. Okay. Okay, sir. Okay. So, sir, all these questions, all that we're asking, so this whole recording will be in YouTube, which will be accessible Yes. to us, but it won't be accessible to like public, The right? public. This is No. just for this is No. just for our group, right? Yeah. This won't go out. This is Okay. an unlisted video that will Okay. only be available through the link and Okay. only to people who have the link. Okay. Okay. All right. फुल Sorry. चार्ज कैसे करते हैं? 2 मिनट का टाइम है इस मीटिंग में, इस मीटिंग को खत्म होने में. सो चार्ज कैसे करते हैं क्रिस्टल्स को? पानी से धो करके रनिंग वाटर के नीचे यू वॉश इट, देन यू smudge it in any sage or any धूप or अगरबत्ती or anything, and then you either charge it in sunlight or you charge it in full moon light. अभी full moon की energies active हैं, so today on tomorrow you can use that full moon energy. After that, if you have to charge, then wait for the full moon or charge it in the sun also. But sun may don't leave them for long because not all crystals can take the sunlight. ठीक, they may break. So थोड़ी देर charge करके then you can again get back to using. Okay, answered? Bye. Yes. So wherever you buy the crystals from, can they ship internationally? Yes, they do ship internationally. There is something called Reiki Crystal Products. It is in Delhi. This is not a paid promotion, but उनका product genuine होता है. So that's why जो भी मेरे से पूछता है, tell them they do ship internationally. No, you can call them up and they'll ship you. Okay. Okay. So, sir, one more question. You said these full moon energies are active now. Crystals, Yes. you said you can keep it in the sun. I'm Hmm. just asking, can we keep our tarot cards also, put it in a pouch or something? Yes, and keep why them not? in front Why of not? us? Don't keep them in a pouch. Keep them exposed to the light. Or just expose, just leave it Yes. open. Yeah, just leave that deck in that light. Let them Oh. absorb. Or you can, spread them a little like this, fan them out. ठीक है. Okay. Good. All sorted. Okay. Thank you so much. It was very good to have you all. I'll see you tomorrow. Bye-bye. Take care. And please be on time. Please join on time. Thank you, sir. Okay. Thank you. Lovely Bye-bye. session. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you. Yeah.